हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्ट पैटर्न में बोल देते हैं AES, और सम टाइम तुम देख सकते हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिखा होता है। तो कोई भी ऐसा विजिबल आ रहा है मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल सेक्शन है और सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एफर्ट से ही हमको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनने लगता है। तो बेसिकली ये क्लास जो है बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड को बिलोंग करती है। नाम से ही दिख रहा है एरोमेटिक है, मीन्स एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स ही चाहिए। तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन पहले मैं लिख रही हूँ। एक एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन से अच्छा और क्या होगा। इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और जो बेंजीन की एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करता है इलेक्ट्रोफाइल एंड बनाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सिंस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है इसलिए नाम हो गया है सब्स्टिट्यूशन, एंड इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एरोमेटिक कंपाउंड पे हुआ है तो नाम पूरा हो चुका है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस कैटेगरी के अंदर हमको 5 रिएक्शंस करनी है। पहली होती है हेलोजनेशन, सेकेंड है नाइट्रेशन, थर्ड होती है सल्फोनेशन, फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइलेशन एंड फिफ्थ होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो इन 5 रिएक्शन को हमें पढ़ना है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो इन 5 मेथड को समझने के लिए हमें इनकी मैकेनिक्स को समझना होगा, और मैकेनिक्स कॉमन है तो लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स फर्स्ट, उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ेंगे। सो रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। स्टेप 1 इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, और ये जो स्टेप है वो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग है। स्टेप 2 इज़ अरेनियम आयन फॉर्मेशन, जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अरेनियम आयन। तो पहले कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें जनरेट होगा इन 5 रिएक्शन में, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन में। एंड नाउ हम ले रहे हैं बेंजीन विच इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट इज़ कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल। तो अब होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो अगर हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। सो रिंग इज लुक लाइक दैट वे, 1 पर माइनस साइन, 2 पर प्लस साइन, एंड बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज़। नाउ इलेक्ट्रोफाइल व्हाट इट डू, इलेक्ट्रोफाइल इस माइनस साइन पे अटैक कर जाएगा। तो इस पर अटैक किया तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। एक हिडन हाइड्रोजन थी जो मैं बना रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल, ये प्लस साइन, दीज डू डबल बॉन्ड। नंबर लिख लेते हैं, दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब डीलोकलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, और डीलोकलाइजेशन हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट बिटवीन 2 एंड 3, तो 4 पर प्लस साइन आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। नाउ 4 पर प्लस साइन, ये डबल बॉन्ड एंड ई और एच। नाउ फिर से डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस। अभी ये 4 नंबर था, ये 5 और ये 6। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बिटवीन 4 एंड 5, तो अब 6 पे प्लस साइन आएगा, दिस इज़ ई एन एच। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक प्लस साइन डीलोकलाइज हो गया है। तो इट लुक लाइक दैट वे। ये प्लस साइन 2 नंबर से 6 नंबर के बीच स्प्रेडेड हो चुका है, एंड this ion is called the arenium ion. Arenium ion is stabilized due to the resonance, and this step is also considered as a rate determination step, means slow step। जो rate decide होता है वो इसी step से decide होता है। So after the arenium ion formation, now in the step 3 जो हमारा arenium ion है अब वो अपनी aromaticity को back लेगा। तो I am using this molecule, we have this arenium ion, ENH. Now to stabilize this plus sign, deprotonation take place, means hydrogen will be out। तो इस स्टेप का नाम है deprotonation। हाइड्रोजन आउट हुई तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एंड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल इज हियर, डबल बॉन्ड, दिस एंड दैट। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डीप्रोटोनेशन एक फास्ट स्टेप है, तो रेट डिसाइड करने में इस स्टेप का कोई यूज़ नहीं है। सो दैट्स वाई वी कुड से कि बेंजीन में अगर हम C6H6
C6D6 और C6T6 की बात करेंगे तो इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि रेडिटर्मिनेशन स्टेप में हाइड्रोजन कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा होता है. सो रेडिटर्मिनेशन स्टेप इज़ एक्चुअली द अरेनियम आयन फॉर्मेशन, जहाँ पे डीप्रोटोनेशन इज़ अ फास्ट स्टेप, नॉट अ पार्टिसिपेटिंग इन द रेडिटर्मिनेशन. सो वी कुड से द नो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन AES. तो इन 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप कॉमन है, दैट इज़ इन 5 रिएक्शंस में, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्कलाइलेशन एंड असाइलेशन. नाउ ओनली द स्टेप 1 इज़ अ डिफरेंट, रेस्ट ऑफ द स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज़ कॉमन. तो लेट्स स्टार्ट विद द हेलोजिनेशन और समझते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म को अप्लाई करके हमने हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया है बेंजीन रिंग पर. हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन मीन्स बेंजीन रिंग is being treated with the halogen, where halogen we are taking chlorine and bromine only. Fluorination is faster and highly violent, so we are not doing. Iodization is slower and reversible, so again we are not doing. We are doing only chlorination and bromination. And during the entire process, it gives us the halobenzene or the aryl halide. This such type of reaction is needed the high temperature and pressure, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो हाईली स्टेबल है, तो रिएक्शन कराने के लिए हमें टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत रहती है. एंड वी आर गोइंग टू यूज़ लुइस एसिड एज अ कैटालिस्ट. लुइस एसिड में वी कैन यूज़ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ प्रिटी कॉमन. इसके अलावा वी कैन यूज़ द FeBr3, डायरेक्ट आयरन भी ले सकते हैं. तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें हमें हाई टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है इन तीनों स्टेप में, सिंस मैंने बोला है कि अरेनियम आयन फॉर्मेशन एंड डीप्रोटोनेशन इज़ कॉमन, ओनली द स्टेप 1 इज़ डिफरेंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि स्टेप 1 हुआ कैसे होगा. तो यहाँ पे मैं क्लोरीन ले रही हूँ, दैट इज़ द क्लोरीन, एंड लुइस एसिड में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. Now when the temperature is higher, so what is happening, these two chlorine is attacking on aluminium. Lewis acid is an electron deficient species, so they are capable to accept the extra electron, and it is gonna be form AlCl4 minus and Cl plus, जिसको हम क्लोरोनियम आयन बोल सकते हैं, और इन जनरल हेलोनियम आयन. And here this one is acting as a electrophile. So when the benzene ring is coming in contact with the electrophile, here the electrophile is halonium ion. It will attack on benzene ring, form the arenium ion, and after deprotonation we will get the chlorobenzene. So in step 1 we got it this, and once we get the and we get the H plus ion after the deprotonation. Now this H plus ion is further treating with the AlCl4 minus, which we are getting here. It will convert into the AlCl3 back and HCl. It's a Lewis acid was the catalyst, and which we can use further also. So that's how the AES take place when we are doing the halogenation. Remember that fluorination, chlorination, bromination and iodization rate is like this way, but fluorination we are not doing, iodization also we are not doing, because it's a reversible and slow. So like if suppose question is coming, we have a benzene and it's been treated with the bromine in presence of FeBr3, high temperature and pressure, then you should understand here is a Lewis acid is given and this is the bromine is given, so AES will take place, and the bromine Br plus bromonium ion will attack on benzene and we will get the bromobenzene. Now let's move to the second number. Second number is nitration. So in nitration, benzene ring being treated with the concentrated HNO3 along with the concentrated H2SO4, it gives us the nitrobenzene. Now the question is, what is the electrophile? Arenium ion is being attacked by the electrophile and deprotonation take place and we will get the nitrobenzene. But we have to understand what is the electrophile here. So I am going to write the HNO3.
This is H2SO4. Now what is happening? Here the sulfuric acid is supplying the proton to the oxygen lone pair. So this hydrogen has to go away. So because of this process, we will get it HOH positive, and we have NO2 here, and this side we get it oxygen minus. Now next what is happening, this water will be out and we will get NO2 positive, and this was as it is. And now NO2 positive, it's called nitronium ion, which is the electrophile. Now one more question is coming in the exam, like here HNO3 and H2SO4 both are acid in general, but here the H2SO4 is providing the proton, so we could say it's a Bronsted acid, and this is the proton acceptor, so we could say it's a Bronsted base. So here this was acting as an acid and this was acting as a base, Bronsted acid and Bronsted base, and the electrophile is a nitronium ion, that is NO2 positive. Now this will attack on the benzene ring and we will get the nitrobenzene. So when this is attacking on benzene ring, we will get the nitrobenzene along with the proton. Proton is reacting with this and will form and will give us the H2SO4 back as a catalyst. Nitration is very important reaction, and sometimes they would ask the rate of the reaction for nitration. So C6H6 is equal to the C6D6 is equal to the C6T6, because no isotopic effect, rate determination step is not looking for any hydrogen and deuterium. So benzene, deuterium and T6 are giving the same rate for nitration. Now in sulphonation, benzene is being treated with the fumed or concentrated H2SO4. You can use the concentrated H2SO4. Chlorosulphonic acid is also useful. It will give us benzene sulphonic acid. This reaction is reversible, very important point. And here the electrophile is neutral electrophile we are going to use. So what exactly happening here? We have a H2SO4. I am writing like that way. We have another H2SO4. Here this hydrogen is attack on oxygen lone pair. So this is the proton supplier, so acting as an acid, and this is proton acceptor, so acting as a base. So we will get it HOH positive, S double bond O, O and OH, and here O minus SO3H. Now this water will be out, so sulfur is getting the plus sign. Now in the end what is happening, this proton will be out and these two electrons shift here. So we will get the SO3, which is the neutral electrophile, and very important question too. So among these 5 reactions, only in this reaction we have a neutral electrophile, otherwise all the reaction having the electrophile which has the positive charge. Now SO3 directly attack on benzene ring in a step 2. These pi electron will attack on sulfur and these 2 electrons will shift toward the oxygen, and sulfur can accept these electrons because it has the empty d orbital, so it can expand their octet. So this will happen like that way. We have hidden hydrogen, this is sulfur, oxygen minus, and here is a plus sign.
arenium ion formation take place due to the delocalization, and in the last step deprotonation take place and these two electrons shift here. So we will get it. Now this proton will attack on this oxygen minus and this is attacking on oxygen minus and we will get the OH here. This is benzene sulfonic acid, we got it in the final answer. Benzene sulfonic acid. So here the two step is very important. First thing, it's a reversible reaction, and second step we have a neutral electrophile which we have to keep it in mind. Rest of the reaction we have the normal electrophile. Now in the end we have Friedel-Crafts alkylation. In this reaction what is happening, benzene ring is being treated with the haloalkane in presence of Lewis acid, anhydrous AlCl3, high temperature pressure obviously needed. So this chlorine is attacking on aluminium because it's a Lewis acid, can accept the extra electron. So we will get the partial positive charge here and it has the partial negative charge. Now this methyl group on attack on benzene ring form the arenium. After the deprotonation we will get the methyl benzene, which is also named as toluene. So alkyl group is being introduced on the benzene, so that is why we could say it's a alkylation. Toluene is a clear, colorless and highly flammable liquid and it has the benzene like odor and used as solvent in painting and coating, etc. So since the alkyl group we have introduced on the benzene ring, so the name of this reaction is called alkylation. Similar pattern we can do Friedel-Crafts acylation. Okay, here we write the example. The benzene when treated with the alkyl halide, so here the carbocation formation take place. Like suppose this chlorine I am taking. Now anhydrous AlCl3 support rearrangement. So primary carbocation will convert into the 2 degree, means more stable carbocation. So chlorine is attacking here, the plus sign is appearing here. So since rearrangement can take place, primary will convert into the 2nd degree. And now this carbocation will attack on benzene ring and we will get it isopropyl benzene, which is also named as cumene. So here the important point that aluminium chloride support rearrangement, so primary carbocation convert to the 2 degree, 2 degree can convert into the 3rd degree. So that rearrangement you have to take it. But yes, if this reaction you are doing in presence of FeBr3, then no rearrangement is required. No rearrangement. As this catalysis not support the rearrangement, so simply this number 1, 2 and 3, the 1 carbon is attacking on benzene ring without any rearrangement and will give us that alkyl benzene. So that is 1, 2 and 3. And this is called Friedel-Crafts alkylation. In the similar pattern we can do the Friedel-Crafts acylation too. The last one, 5th number. This was the 4th number. Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation means acyl group we are going to introduce on the benzene ring. So like for example, benzene is being treated with acyl halide or maybe the acetic anhydride in presence of Lewis acid, aluminium chloride, anhydrous. So this chlorine will attack on aluminium chloride, will form the partial positive. This is called acylanium ion. And it will attack on benzene ring. So after the arenium and deprotonation, it gives us C double bond OCH3 acyl group on the benzene ring. The name of this molecule is called acetophenone. It's a common name
or else methyl phenyl ketone. CH3 C double bond O positive, this is named as acylanium ion, which act as electrophile. So these were the 5 AES we have done it. Now in the next part we are going to do how it is getting affected with the donor group and withdrawal group. So stay connected and keep watching the second part for the advanced problems. Thank you.